वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। और क्योंकि हम गर्मियों के ठंडे ठंडे ड्रिंक्स बाजार में गर्माती लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो आज मार्केटिंग एंड आई में भी एक ऐसी ही ब्रांड से बातचीत है। इस ब्रांड का मानना है कि आज मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सीजन के हिसाब से नहीं, कंज्यूमर के साथ रिश्ता बनाने के लिए करनी जरूरी है। तो बात करते हैं कोका कोला की वीपी मार्केटिंग अनुपमा आलूवालिया से। आपका स्वागत है अनुपमा। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज कोका कोला देश में एक बड़ा ब्रांड है। आपके नए कैंपेन में आप खुशियां लुटाने की बात कर रहे हैं, तो बतौर एक ब्रांड ये समझाइए कि किस तरह आप कंज्यूमर से अपने आप को जोड़ रहे हैं। What makes a brand big is really the fact that we believe that the consumers own the brand. And I think that's the fundamental principle that we would love to work on an ongoing basis. Particularly when we enjoy a status which is iconic, the brand is well recognized and well loved in so many countries, and even in India. So from that point of view, that's a very important aspect of our brand building strategy. The second point is being relevant and being connected at all times. And ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है आज के युग में, क्योंकि consumers जैसे आप और मैं, we don't have the time, we don't have our attention span is getting limited, and therefore when we start connecting with various brands across various categories, we start connecting with those brands that actually really manage to engage us and actually manage to build a emotional bond with us as a consumer. So when I place myself as a consumer, I feel that's the one question I always need to be true to. और ये मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ कि क्या कोक मेरे से emotionally connect कर रहा है? And if the answer is yes, and the answer is always yes, then I know that we are doing a good job. अनुपमा, कोका कोला की क्या स्ट्रैटेजी और किस तरह से आप अपने ब्रांड्स के लिए प्लानिंग करते हैं, खासतौर से अभी के माहौल में जब ड्रिंक्स बाजार में एक ब्रांड वॉर चल रही है? Well, actually, I would like to say that our brand plans are a function of what we would like to achieve in the marketplace. And when I look at the brand plans, whether it's for brand Coke or for Thumbs Up or Sprite or Fanta or Limca or even Maaza and Minute Maid, or any of our brands in the portfolio, our brand plans are a function of what the intention is. हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारे internal ambitions क्या हैं brand के लिए, and उस basis पर हमारे brand plans बनते हैं. When we look at when to advertise or when to be in the market with strong on-ground activation ideas, they are all a function of how we would like to connect with the consumer on an all year on an ongoing basis. And ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो सीजनैलिटी फैक्टर है या सीजनैलिटी फैक्टर थी पहले समय में, अब वो थोड़ी कम होती जा रही है, और उसके कारण हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ब्रांड का जो एक इंटेंट है, ब्रांड की जो स्ट्रेटजीज हैं इन मार्केट, वो ऑल द ईयर होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनी वन पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम, but it is about building relevance throughout the year. And that is one thing that we would love to do, because we would love to keep connecting with our consumers on an ongoing basis throughout the year. कोका कोला की ब्रांड स्ट्रैटेजी में कितना योगदान होता है आपके क्रिएटिव और मीडिया प्लानर्स का, और एक क्लाइंट के नाते आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? When it comes to expectations, all expectations are equally shared. The starting point of the brand strategy or the building blocks are the consumers, and the insights that we get from consumers are actually shared with the advertising agency, with our agency teams, so that we bring them on board on what we are really expecting to do out of a particular aspect of the brand strategy and the campaign. And we go through a lot of discussions. We always make it a point to look at various viewpoints to understand how we can actually work and take this further. So that really is the essence. Creative strategy or is actually has to have its roots in the brand strategy. So the creative strategy is very strongly interlinked with the brand strategy. It cannot operate in isolation, and it actually reflects what the brand is thinking or what the brand wants to do. And therefore, it is very essential to have that very strong interlinkage between creative and brand. And that's really what we always make an attempt to work on.
So our creative partners they are very much part of the brand building process. आज देश में आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं और बतौर ब्रांड आपके फोकस एरियाज क्या हैं? I think the whole story is about opportunity and how we can actually connect on the opportunity that we have in a market like India. Whether it is about building per capita consumption, whether it is looking at new users entering the category, whether it is about recruitment of youth, whether it is looking at a new way of connecting with teenagers, whether it is our whole portfolio. So हमारी जो portfolio है, we have brands like Thumbs Up, we have Sprite, we have Fanta, Limca and Coke. And the whole objective is to really connect across the portfolio. So to my mind, it's all about keeping the consumer at the forefront of our intention. And that has to really drive the brand strategy. In semi-urban and rural markets, there is a need for us to focus on affordability. There is a need to focus on availability. There is a need to focus on accessibility of our brands. So affordability, accessibility and availability, these three critical strategies become very important when we start connecting for across our brands as well. तो वाकई बिना किसी शक के इन्हीं सब वजहों से कोका कोला आज इतना आगे है इस ब्रांड वॉर की और ड्रिंक्स वॉर की अगर हम बात करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए अनुपमा।